The currency of terror is narcotics. But subsequently, when I had to choose among other services, I chose police. जब इतने मेजर अटैक्स हुए हैं कि इट एक्चुअली ब्रॉट द एंटायर नेशन टू द ब्रिंक ऑफ वॉर. So as we grow, the negative brain also grows along. Topography, geography, demography, everything you will find in District Jammu. Terrorism, terror financing, drugs and all. नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू द अभिषेक डॉक्ट्रिन. और आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एसपी ऑफ साउथ जम्मू, डॉक्टर अजय. वेलकम सर, जय हिंद, वेलकम टू द शो. जय हिंद. जय हिंद सर. तो सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कैसे पुलिसिंग के अंदर आए, क्या बचपन से इंटरेस्ट था और जस्ट हाउ डिड यू कम टू द सर्विस? बचपन का इंटरेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं था. My interest initially जो interest थे that I by the grace of God वो सारे पूरे हुए. I am an ex-merchant navy officer. Okay. So I'm a navigator. Then I was commissioned into Army. 106 TA Para was my unit, and subsequently clearing civil services exams and coming back. That was, to be very honest, this thing came after 10-11 years of when I had already started my career. Okay. So this is not, you won't get it like this. If you want me to be honest, it was not my first choice, or in the sense, not choice I would say, but I never thought of joining police. But subsequently, when I had to choose among other services, I chose police. This is also a fact. Great sir. So you have witnessed everything. समुंदर से लेकर टेरिटोरियल आर्मी के अंदर आर्मी भी कवर कर ली एंड नाउ द पुलिसिंग पार्ट. Yes, God has been kind. परफेक्ट सर. तो थोड़ी सी बात करनी है मेरे को आपके जेएनके के अंदर, स्पेशली जो साउथ जोन है, इसमें बहुत सारे जुरिडिक्शन एरिया कवर हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे रायका फॉरेस्ट के इलाके हैं, कासिम नगर है, राजीव नगर है, बर्मनी हिल्स भी है, और आप ही के एरिया के अंदर आईबी भी आ रही है, एयरफोर्स का स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है. तो इतने सारे चैलेंजिंग जोन को अंदर को आप कैसे मैनेज कर रही है इस टाइम पे आप या आपकी पुलिसिंग? देखिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है ये अपने आप में एक डिफरेंट वर्ल्ड है. इट इज़ ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ amalgamation of all kinds of topographies and topography, geography, demography, everything you will find in District Jammu. So this is population wise and area wise if I see. Otherwise there can be some other districts which are area wise very big, but given all the challenges, Jammu district is definitely, it stands out in its diversity in every sense of it. Now out of Jammu district, if we talk about Jammu South zone, yes, as you said that the area spans from the lower Shivaliks, बर्मिनी हिल्स से लेके, जैसे आपने नाम ले ही ली है, तो उसके बीच में रिवर तवी जिसका नाम से सूर्यपुत्री है, तो उसको क्रॉस करके राइट अप टू द आईबी जो बकवाल सेक्टर है. सो दिस इज द स्पेन. और इसी के अंदर ऑल द क्रीम ऑफ सोसाइटी ऑल्सो लिव्स इन दिस एरिया, वेदर इट इज Gandhinagar area, or it is Channi Himmat or Trikuta Nagar. So these are highly populated also, and people, those people who are the cream of the society, we can say, they are also mostly living in this area. Once you talk about the vital installations, as you said, 26 div is here, Air Force Station is here, Civil Airport is here, Railway Station is here, all refineries are here. So international bus terminal is here. So all kind of things, but ठीक है. तो सर, इतने सारे चैलेंजिंग एरिया को मैनेज करने में दिक्कत तो बहुत सारी आती होंगी, बिकॉज गिवन द हिस्ट्री ये कुछ एरियाज ऐसे हैं
जब इतने मेजर अटैक्स हुए हैं कि इट एक्चुअली ब्रॉट द एंटायर नेशन टू द ब्रिंक ऑफ वॉर। तो अगर आप देखें तो एटलीस्ट मतलब एस्टिमेट हर अटैक में 10-15 लोग तो ने अपनी जान गवाई है, एंड इंक्लूडिंग द पुलिस फोर्स एंड द सीआरपीएफ और बाकी सब यूनिफॉर्म वालों ने भी। बट हाउ डू यू मैनेज ऑल दोज थिंग्स कि आप ह्यूमन इंट पे काम ज़्यादा होता है या टेक्निकल सर्वेलेंस पे ज़्यादा काम होता है, या कैसे आप लोग मैनेज करते हैं पूरे एरिया को? लेकिन देयर इज ए कंबाइंड एफर्ट. आई कांट से दैट this is the exclusive job which is being done from the my table. It is a combined effort of all the stakeholders, of all the security agencies, intelligences, civil administration, and definitely I take pride in this that the JKP is at the forefront. So once you talked about these attacks, I know that you are referring either to Kaluchak or the attack which has happened in the Qasim Nagar area के अंदर. इसमें civilians हमारे more than 20 civilians were martyred, and the other attacks, Sunjwa military station. I know that what you are trying to refer. So this is a combined effort, and but I would also say one thing, that once we are playing a game, let's talk about hockey or football. So you only count those goals which are executed or done, but there are many goals which the players they don't allow it to actually the other team to score a goal. So a lot of such goals are already being actually denied to the opposition. Once I talk about opposition, I mean our adversary, and the adversary is very clear. That is our hostile neighbor, western neighbor, which is Pakistan. तो इसके अंदर में एक चीज़ भी है ना, आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यू हैव टू सक्सीड ऑल द टाइम्स. आपको हर बार सक्सेसफुल होना है, बट दे हैव टू सक्सीड ओनली वन टाइम. तो मतलब ये चैलेंज तो है ना, आप कितनी बार जाकर देखोगे, बिकॉज इतनी तो मैन पावर भी नहीं है. तो आई होप कि मेरे ख्याल से लोकल इनपुट्स भी कुछ आते होंगे, सिविलियंस के भी आते होंगे. बिकॉज अदरवाइज आप देखिए, मैं दिल्ली से कार ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी कार किसी ने नहीं रोकी, नॉट इवन अ सिंगल चेक मैंने पे मेरी गाड़ी रुकी हो. बट जिसकी रुकनी होती है उसकी रुक जाती है. तो हाउ डू यू एक्चुअली डिफरेंशिएट, बिकॉज ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है. ट्रेन से यहाँ पर जैसे आपने बोला, चलो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा एनहेंस होती है, बोर्डिंग के टाइम पे भी होती है, डी बोर्डिंग के टाइम पे भी होती है. बट हाउ डू मैनेज दिस रोड्स? पाकिस्तान से भी रोड है, पंजाब से भी रोड है, हिमाचल से भी रोड्स है, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली ट्रेन, जहाँ की जनरल बोगीज में इतनी भीड़ होती है कि टीटी नहीं घुस सकता. तो उन सबको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि दिस इज वेयर आवर स्पेशलाइजेशन लाइज, एंड स्पेशली ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस, वी वर्क ऑन बोथ ह्यूमन इंटेलिजेंस as well as technical intelligence. So there are special teams which are working. We have got our SOG also. We have got other surveillance units which are operating around the clock in different areas. And yes, there's a lot of effort which is being put, and sometimes we are unlucky, but many times most of the times we are lucky. नहीं सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर लकी. दैट्स व्हाई द एंटायर नेशन इज सेफ. अब रिसेंटली एग्जांपल है फ्रॉम द पुलवामा, जहाँ पे लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर ने ही देखा था, एसपी सर ने ही वहाँ पे देखा था कि कुछ पोस्टर्स लगे हैं. दैट्स हाउ द एंटायर नेटवर्क गॉट बस्टेड. मतलब अगर आप लोग ना जागरूक तो हमारा तो पता नहीं साउथ में आके क्या ही होगा. मैंने आपको इसीलिए पहले कहा था दैट देयर आर सो मेनी गोल्स व्हिच आर प्रिवेंटेड, बट that's where the strength of the team lies, and we take pride. I mean, this is such a big this was a big challenge, and with the collective and very professional efforts of Jammu Kashmir police, a much bigger loss to the many cities in the country, it was prevented. So this shows the the strength, depth and professionalism of Jammu Kashmir police. So true sir. मतलब gone are the days जब सिर्फ हम आर्मी की बात करते थे, बट गिवन द सर्कमस्टांस ऑफ JNK स्टेट, पुलिसिंग का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लोगों ने देखा है कि हाउ द JNK पुलिस हैव डेल्ट द काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज, फिर चाहे वो कश्मीर के अंदर हो चाहे जम्मू रीजन के अंदर हो.
बट सर अगर हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं तो टेररिज्म भी इवॉल्व कर रहा है, तो आई एम श्योर कि उन्होंने भी बहुत कुछ अपने आप को इवॉल्व किया होगा, इवन वो भी न्यू टेक्नोलॉजीज पे आए होंगे। तो हाउ डू यू सी कि वो लोग क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, नोटबंदी के बाद से फाइनेंस के भी नए तरीके आए होंगे, नाउ गिवन द चांस की क्रिप्टो बहुत ज़्यादा है, हवाला की भी चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। सो हाउ डू यू सी द एंटायर टेरर फाइनेंसिंग एंड साइबर क्राइम ऑल टुगेदर? देखिए, the first statement what you made was like uh, upgradation or upgradation of the tactics of the enemy are their skills also. So as we grow, the negative brain also grows along, and especially if a country which is hell-bent or which is which has lot of ill will or negative mind to create so much of disturbance and to spread terror. Their brain is growing faster uh, in terms of the negative efforts and negative deeds. So definitely they have also grown. You might be knowing this fact that the drone part of it, the Yeah. dropping of drugs and weapons and currency, explosives, ammunition, everything. This was started by Pakistan only, along the IB, along the LOC, to maintain their supply chain, and then they are certainly using other, I mean, uh, ओपन सोर्स पे जो भी अवेलेबल आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आई मीन कम्युनिकेशन के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, they have posed a challenge before us. There is no doubt, and it is a very serious challenge also. लेकिन again मैं यही कहूँगा, fortunately, that our security forces, Jammu Kashmir Police, is capable of solving, tracking, and converting it into actionable int, or to prevent certain things from happening, like terror attacks, or to disrupt that supply chain. Sure, sir. And the second part, what you were talking about, it was the terror financing part. Yeah. Terror financing also, see, there have been a lot of growth in professional investigation of JKP. On the lines of NIA, in JNK, SIA, State Investigating Agency, was raised, and now it's been 4 years. And SIA, with the professionalism and with the focused on certain areas primarily related to terrorism, terror financing, drugs and all. So those kind of investigations have revealed certain facts which probably otherwise would have remained uncovered, or other areas or other dimensions of it. So luckily I was also part of SIA, so that's how I can tell you with conviction that how. So we have Jammu Kashmir Police focused and tried to achieve that kind of expertise in both kinetic as well as non-kinetic actions. So in non-kinetic actions, the investigation also played a very important role. Lot of terror financing modules were busted. Like you might have heard about MBBS racket. Like so many people were being sent from J&K to Other states. Pakistan and for doing MBBS, and that money was like, it was a kind of hawala. There were some other things also which I won't like to say it on. बट सर एक चीज है ना, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान वालों को कुछ भी इलाज कराना होता है सो दे कम टू इंडिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कौन पढ़ाने के लिए भेजता है अपने बच्चों को? I will not get into this. We are probably, I mean, I can say that this is a question which I am not an authority to answer. But yes,
this was a part of the Hawala, which was also busted by SIE only, what I talked about. And then you are talking about the cryptocurrency and other things. They are also being used, and very soon, I'm sure that the professional investigation will also unravel that. But let me tell you, in present times, the currency of terror is narcotics. So the hottest and the safest currency is Narcotics. narcotics, and narcotics.